Good morning, students. Myself, Mr. Karthik K. Patel, lecturer in Electrical Engineering Department, VPMP Polytechnic. Subject name Electronics Component and Circuit, Unit 4, Simple Circuit using ICs. Today's topic is Timer IC 555. Simple that IC 55 timer. The objective of today's session is Timer IC 555, functional diagram of IC 555, pin connections of IC 555, basic connection of IC 555, and internal operation of IC 555 timer, and one application used with the relay IC 555. Now, IC 555, why the 555 IC timer are used? These IC are used in a integrated circuit or like is in chip for the varieties of timers, delays, pulse generator, and oscillator application. And also it is used in a monostable multivibrator, bistable multivibrator, and also used in a stable multivibrator. So that the this 55 timer IC are used for controlling the timing, delay timing, or pulse generator, and also different types of multivibrators, and also in a day to day also the new inventions used regarding the IC 55 timer. Now, the IC55 timer is a 8-pin IC that is capable of producing a accurate time delay and oscillators. In the time delay mode, the delay is controlled by the one external resistor and capacitor. And oscillation mode, the frequency of oscillation and duty cycles are both controlled with the two external resistance and one capacitor. You see in a diagram, this is the pin diagram of IC 555. One pin is used for ground, second pin is used for trigger, third pin is used for output, and fourth pin is used for the reset. Fifth pin is used for control, sixth pin used for threshold, seventh pin is used for discharge, and eighth pin is used for the plus VCC supply. And also in a round shape ICs, there are the following type of the pin established in the IC55 timer. Now, functional block diagram of IC555. You show in a fig the IC555 timer. One comparator 2 are used, one flip-flop circuit are used, one transistor circuit are used, and also this shown the pin diagram pin of IC555. The pin number 3 is called as the output, pin number 4 is called as a reset, pin number 1 is for as a ground, and pin number 2 is for the trigger voltage, and threshold voltage is the pin number 6, and the pin number 5th is for control voltage, and pin number 8 are used for the plus VCC supply. So this is the main construction and functional block diagram of IC555. You see in the diagram, IC555 have a two comparator, two control transistor, one flip-flop circuit, one output stage, and both the comparator reference voltage is 5 ohm. These three resistors, resistance 1, resistance 2, and resistance 3, all are the 5 ohm. The 5 kilo ohm resistance are used for reference comparator voltage and threshold comparator 2 by 3 VCC voltage, and also trigger comparator 1 3 cc voltage are given to the comparator. That means here 2 by 3 voltage and here 1 by 3 comparator voltage are given with the comparator 1 and comparator 2. The trigger component, non-inverting
connected to the 1/3 VCC, and the inverting connector are connected to the plus VCC supply. So that here the negative is a non-inverting system and plus is the inverting system, so that it is connected with the plus VCC supply. Here the all comparator to the plus VCCs are connected to the uh, VCC connected. And the pin number 3, the output stage. Pin number 3 is a output stage when it's give the zero voltage, so that the transistor 1 is on across the capacitor, across the transistor 1 and across the capacitors are connected with the discharge line. Here one capacitors are connected with the discharge line, so that the capacitor timing is short. So that this is the main functional block diagram of a IC 555. Now internal operation of IC 555 timer. The IC 555 timer is an internal component like has a two comparator, one flip flop, transistor, three resistors of the 5 kilo ohm, and the comparator. So you see in one box when I mention, if the plus VCC is greater than the minus VCC, the output of the uh, is a digital one, and if the minus VCC is a greater than the plus VCC, the output is digital is a zero. When the uh, V minus is greater than, so that the output is zero, and when the plus greater than, then it is called as a one. So comparator is given in a two two output, one is a one and second one is a zero. When the zero is come, negative voltage are increased, and when the one is output get when the positive voltage are given to the comparator. Here you see in the pin diagram of IC 555, the pin number 1 is used for the ground, pin number 8 is for the plus VCC. That means it is a plus and ground is a minus. Then the pin number 2, the pin number 2 are given to the triggering pin, and it is give the triggering voltage to the IC. Then pin number 4 are given is connected as a reset, and this reset pin are used when the timer is on and cycle is continuously. when फिर से हमको साइकिल ऑपरेट करनी है, तो again we are push the reset button, and then after again the timer are start from the zero. When we press the reset button, then again the all the cycles of the output are starts from the zero. Then the pin number 3R is a output pin. We get the output in form of 0 and 1 and cycles. Then after pin number 5 are the used for the control the voltage, and pin number 6 are used for the threshold output. So pin number from the pin number 5 थ्रेशोल्ड कंपैरेटर इन्वर्टिंग इनपुट हम लेते हैं, और वो पिन से हम एज अ रेफरेंस आउटपुट देते हैं. ये पिन का यूटिलाइज करने के लिए हमें ऑन रिक्वायर्ड मिनिमम 0.1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर चाहिए. देन वी आर यूज दिस पिन. नाउ बेसिक कनेक्शंस ऑफ IC 555. You see in figure 1, this one. This is only the one black color, and all the 8 terminal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, sorry 8. तो टोटल 8 जो पिन है, बट एक्चुअली कनेक्शन कैसे आईसीज, ये जो पूरा आपको ब्लैक कलर दिख रहा है, तो ब्लैक कलर के अंदर ये जो ब्लैक कलर है, तो ब्लैक कलर के अंदर कैसे इधर एक कंपोनेंट को कनेक्ट किया जाता है, तो वो हम अभी स्टडी करेंगे. तो आप देखिए कि पिन नंबर 1, तो पिन नंबर 1 के साथ 3 रजिस्टर्स कनेक्टेड है, वो डायरेक्ट पिन नंबर 8 से भी कनेक्टेड है, क्योंकि ये प्लस टर्मिनल है तो ग्राउंड है माइनस टर्मिनल.
वन के साथ, ग्राउंड के साथ डिस्चार्ज लाइन भी कनेक्टेड है और ट्रांजिस्टर भी कनेक्टेड है, और ट्रांजिस्टर के साथ ये आउटपुट ड्राइवर, यहाँ से आउटपुट भी कनेक्टेड है। देन आफ्टर यहाँ फ्लिप फ्लॉप दिया हुआ है। फ्लिप फ्लॉप ये जो दो कंपेरेटर है, कंपेरेटर के जो आउटपुट है उसको फ्लिप फ्लॉप करके यहाँ से आउटपुट डिवाइस को देता है और आउटपुट ड्राइवर आउटपुट देता है। व्हेन आई प्रेस द रीसेट बटन टू द फ्लिप फ्लॉप, जैसे ही मैं रीसेट बटन दबाऊंगा तो फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। रीसेट होगा तो फिर से प्रोसेस जो 0 और 1 की प्रोसेस है वो फिर से यहाँ यूज होगी। और कंपेरेटर 1 के साथ हमने कंट्रोल वोल्टेज को कनेक्ट किया है एज वेल एज थ्रेशोल्ड वोल्टेज को कनेक्ट किया है, जिसे हम नॉन इन्वर्टिंग इनपुट और इन्वर्टिंग इनपुट को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे हमारा जो IC55 टाइमर है उसके अंदर ऐसे रजिस्टर्स, कंपेरेटर, फ्लिप फ्लॉप एंड आउटपुट ड्राइवर एंड वन ट्रांजिस्टर आर कनेक्टेड विद दिस पर्टिकुलर पिन। देन आफ्टर पिन नंबर 1 जिसको हम ग्राउंड बोलते हैं, और ग्राउंड पिन कनेक्टेड विद द 5 टाइमर फॉर द नेगेटिव सप्लाई। Second pin number 2, it's called as a trigger. The negative input of the comparator number 1, the negative uh, pulse on this pin set the internal flip flop when the voltage drop below the 1/3 VCC. Then after pin number 3 is used for the output purpose. Now the pin number 1 is for ground 1, pin number 5 is for control voltage, pin number 4 is for reset the flip flop, pin number 6 for the threshold, the all positive inputs of comparator 2, and this pin is used to reset the flip flop when the voltage is applied across the 2/3 VCC, and it is output to switch from high to low step. This pin is connected directly to the RC timing circuit. Then after pin number 7, pin number 7 is a discharge pin. Discharge pin is connected to the directly to the collector and internal collector of the internal NPN transistor, which is used for discharging or charging the system when timing capacitor to ground when the output at pin 3 switch is low. And then the pin number 8 is a plus VCC. This is the power supply pin to the general purpose of IC 555, and the voltage between the range is 4.5 volt to 15 volt. This is the pin description of IC 555. When the one IC 555 with the relay, when we are use the relay, तो जैसे ही हम रिले का यूटिलाइज करते हैं और आईसी से हम दूसरे कोई साधनों और जो इक्विपमेंट्स है उससे वोल्टेज देना है, उसको करंट देना है, तो वी आर यूज द वन रिले सर्किट. We are use the one here, one relay circuit, one reverse bias direction, and one the relay coil are connected with the transistor through the resistance. The pin number 3 is the output pin, so that we for the pin number 3 we are connected the one relay, and one relay is also connected with the supply pin number 8 VCC. When रिले में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा अथवा फ्लो बंद है तो ऑटोमेटिकली जो मैग्नेटिक फील्ड जो है कॉइल के अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा. जैसे ही बंद हो जाएगा तो सो दैट मैक्सिमम वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, और जो प्रोड्यूस होगा वोल्टेज वो ट्रांजिस्टर को डैमेज करेगा. इसलिए हमने एक फ्री व्हीलिंग डायोड, दैट मीन्स के रिवर्स बायस डायोड कनेक्ट किया है, जिससे ये जो रिले कॉइल है, ये रिले कॉइल का करंट जो है उसको लिमिट करे, उसको ऑन करे, उसको ऑफ करे, और जो एनर्जी स्टोर है वो एनर्जी कहाँ यूटिलाइज हो जाए, ये डायोड में यूटिलाइज हो जाए, सो दैट द ट्रांजिस्टर जो है उसमें कोई फ्लो यहाँ से न जाए और यहाँ से मैक्सिमम करंट फ्लो किया जाए, डायोड में जाए. तो इससे ऑटोमेटिकली ट्रांजिस्टर जो है वो हमारा सेफर रहेगा, और ट्रांजिस्टर हमारा सेफर रहेगा तो ऑटोमेटिकली जो स्विचिंग ऑपरेशन है IC55 टाइमर का तो वो स्मूथली हो पाएगा. इसलिए हम यहाँ रिले का यूटिलाइजेशन IC55 टाइमर के लिए साथ करते हैं.
तो आज के सेशन में हमने कौन से पॉइंट्स जो है वो स्टडी किए. टाइमर IC55, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ IC55 टाइमर. इट इज अ वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन for your university examination for the 3 marks question and as well as 4 marks question. Then after basic connection of IC55 timer and one IC55 timer with the relay applications, there are the 3 questions are the most important for your university examination for the 3 and 4 marks question. And also the connection pin connection diagram of IC555 and internal operation of IC555. ये both ICs and questions are most important for the 2 marks questions in a GTU examination. So that we are today we have covered the IC55 timer. Thank you very much.